दो दिन में हम लोगों ने जिनका साथ रहा है उसमें दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अलगप्पा यूनिवर्सिटी कराईकुडी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, बीएचयू, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी, भारतीय विचार केंद्रम और ऋषिवुड यूनिवर्सिटी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ रहे। इन 2 दिनों में हमारे साथ युवा साथियों के साथ कई फॉर्मर डिप्लोमेट्स, सीनियर वरिष्ठ संघ के प्रचारक, कई संस्थाओं के डायरेक्टर, चेयरपर्सन जो शोध संस्थाएं हैं उनके, और हम लोगों ने 2 दिन उनके साथ रह करके ये इस विचार पर हम लोगों ने मंथन किया है। यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसमें कुछ प्लान्स हैं, मैं आपके साथ साझा करता हूं कि कुछ कोलैबोरेटिव इवेंट्स अक्रॉस इंडिया ऐसा करने का प्लान है, जो उसमें सेमिनार, सिंपोजियम्स, पब्लिक डिस्कोर्सेस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान, पीपीआरसी, एकात्म मानव दर्शन आदरणीय महेश जी के मार्गदर्शन में और प्रभात प्रकाशन के साथ मिलकर के और भी जितने साथी आए जिनसे हम लोगों का परिचय हुआ, जिनसे 2 दिन में हम लोगों ने काफी साथ में मिलकर के सीखने का, आदान प्रदान विचारों का, उनके साथ मिलकर के देश भर में हम लोग इस कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित करेंगे पूरे 1 साल। ये 60 साल जो दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन भाषण का जो पूरा अभी हुआ है उसको 1 साल तक हम लोग करने वाले हैं। एसपीएमआरएफ की स्पेशल पब्लिकेशन सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें अभी जो पत्रिका का लोकार्पण हुआ 10 साल उसके पूरे हुए, नेशनलिस्ट वेबसाइट का भी आप लोगों ने देखा कि एक ढंग से वेबसाइट का मेकओवर हुआ है दीनदयाल संसार का। उसके साथ साथ पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं पब्लिकेशन के, उन सारे फॉर्मेट्स के थ्रू हम इस विचार को आगे बढ़ाने वाले हैं देश भर में। एक जो बात इसमें निकल करके आई है कि अभी तक देश और दुनिया में इंटेलिजेंट कोशिएंट को एक मोनार्क माना जाता था। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन उन्होंने दिया उसके आलोक में हमने 2 दिनों में यह भी चर्चा की है कि इंटेलिजेंट कोशिएंट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल कोशिएंट, मोरल कोशिएंट और सोशल कोशिएंट जब मिलता है तब परिपूर्णता आती है सोच की। इन सभी विचारों को ध्यान में रख करके एक विषय जो प्रदर्शनी का हिस्सा भी है, आपने देखा भी होगा कि ग्रॉस इंटीग्रल डेवलपमेंट इंडेक्स एक जीडी की अवधारणा है जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है। क्योंकि जो जीडीपी है ये केवल एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव ही देता है, तो ग्रॉस इंटीग्रल डेवलपमेंट इंडेक्स इसको लेकर के हम एक कैंपेन चलाने वाले हैं कि जीडीपी को लेकर के जो एक एकाकी जो दृष्टिकोण बना है विकास को लेकर के, वो एक 360 डिग्री एक व्यू पॉइंट बने, उसको भी लेकर के आगे देश भर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दीनदयाल दर्शन, a civilizational reflection on the contemporary world, ऐसा एक प्रोजेक्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं जो प्रेजेंट डे सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स, कल्चरल शिफ्ट, टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस हैं या जो एक्सेलरेशंस हैं, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हैं या जो इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हैं, उनको भी लेकर के, और सबसे बड़ी बात कि आज अगर दीनदयाल जी होते तो वह इस बदलते दौर में जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसको लेकर के उनकी दृष्टि क्या होती, हम उस दृष्टि से भी इस बदलते दुनिया को एक बार देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये साल भर का हमारा कार्यक्रम है और यही हमारा वे फॉरवर्ड है। और एक वे फॉरवर्ड और है कि हम जो 2 दिन यहाँ रहे तो आपस में एक मेल मिलाप बढ़ा है, एक समन्वय भी हमारा आपके साथ हुआ है। जो यहाँ आए हैं, मैंने देखा कि सत्रों में कोई भी यहाँ से बाहर नहीं गया, तो इस विषय को लेकर के जो रुचि रही और जो लेकर के हम जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि एक प्रकाश पुंज लेकर के जा रहे हैं। और 1 वर्ष तक तो मिनिमम, जीवन भर हमको करना है, लेकिन 1 वर्ष मिनिमम एक योजना के साथ, और जो संस्थाएं यहाँ लगी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन सहित,
उनके साथ समन्वय के साथ हम लोग देश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सिंह जी। एक किताब का विमोचन हम करेंगे, जैसे हर सत्र में हमने किताबों का विमोचन किया। अमृतकाल कॉलम, आजादी के 75 वर्ष। मैं अनुरोध करता हूँ नरेश बंसल जी जो इसके ऑथर हैं वो भी मंच पर आए, कृपया करके पुस्तकें लेकर आए। जोरदार तालियों से इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं रोहित जी से कि वो आए और एकल गीत। रोहित जी। एकल गीत है, पीछे नहीं केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। डर नहीं तूफान बादल की अंधेरी रात का, डर नहीं है दूत दुनिया के कपट की घात का। नयन में ध्रुव ध्येय के अनुरूप ही दृढ़ भाव भर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। है भरा मन में तपस्वी मुनिवरों का त्याग है, और हृदयों में हमारे वीरता की आग है। हाथ है उद्योग में रत राष्ट्र सेवा धार कर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। स्वार्थ का लवलेश सत्ता की हमें चिंता नहीं, प्रांत भाषा वर्ग का कटु भेद भी छूता नहीं। एक है हम एक आशा योजना साकार कर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। शपथ लेकर पूर्वजों की आस हम पूरी करें, मस्त होकर कार्यरत हों, ध्येयमय जीवन धरे। दे रहे युग को चुनौती आज हम ललकार कर ले
हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, को भंवर से पार कर, को भंवर से पार कर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री एस गुरुमूर्ति जी से कि वो अपना उद्बोधन देंगे। आदरणीय एस गुरुमूर्ति जी से एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। सबको नमस्कार। The President of the Bharatiya Janata Party, the Jagat Prakash Nadda ji, my relationship with him goes back to almost 35 to 40 years. Mahesh ji, who is probably the most well-versed theoretician on Ekatma Manavad, and I tell you at the beginning itself, I am not going to tread his toes because that is not an area of my expertise. I will talk about Ekatma Manavad as it is functioning on the ground, as I have experienced it in the course of my 25 years of understanding of the Indian economy, society, culture, value systems, as part of the Swadeshi Jagran Manch, in which also I had the fortune of journeying with him. And my friend Kanas Babadi is here. And Anirban Ganguly, who is the principal drive behind making me be present here. And I must thank Santoshji also for ensuring that I have an opportunity to share my views before this August gathering. Binayji, who is the director of this institution, Sunilji, who is administering the stage, and Prabhatji, who is ever present in all our functions where books are released. As I said, integral humanism is not exactly the translation or transliteration of Ekatma Manavad. English is a very inadequate language to capture our feelings, our philosophy, our culture, our way of life. But still, this is the mechanism which has been given to us to handle the world. So we have to handle our own English educated audience, because much of our country is run by the English educated mind, people, and English educated academics. So we have to use that language to communicate as much as possible our way of life. Ekatma Manava Darshan talks about Ekatma. This is the most critical part of the entire theoretical foundation of Deendayal ji. When Deendayal ji was expounding this idea of Ekatma, it is only science which had accepted this idea. Three great Nobel laureates. One is Schrödinger, the next is Niels Bohr, the third is Brian Josephson. These are great national Nobel laureates in science. They said the entire universe, what is the foundation or the functioning mechanism of this universe? When the world was being looked at by Newton, Newton constructed this world, this whole building, this you, me, the world, the different planets.
Newton said these are all real. But quantum mechanics said these are only appearances. All this has come out of the atom. Atom is not something which you can see. Trillions and trillions of atom moving in a regular fashion, the atomic waves, that create this appearance. So the Newtonian theory became unacceptable to science when the quantum mechanics came. So how did the atom come into being? When this was being debated, Einstein said you have to move faster than the light backwards to understand how atom came. And this was revealed in the Big Bang theory, that a 1 millionth of an atom developed such heat, it exploded and produced several trillion megatons of atomic energy, and that is what is expanding and seeing all this, what we are seeing. The physical universe came out of this 1 millionth of an atom, which exploded. Then they said, how did this 1 millionth of an atom came? Schrodinger said, you have to look at the Vedas to find out how did it come. I have spoken in IIT, I have spoken in IIM. No one knows about it. He's a Nobel laureate. And Neil Bohr, he said, I began asking questions about the universe only after I began reading Vedas and Upanishads. And this all happened before Deendayalji. This is very important. When Deendayalji spoke about Ekatma, he spoke about that ultimate consciousness, which is one pervading consciousness, which informs the entire creation. It's not just human beings. And I am going to reveal more how I understood Deendayalji in the context of economics, culture, way of life, and the relationship between man and nature and man and man. Unless we have this helicopter view, reading Deendayalji was a rishi. Every rishi spoke only 2 sentences. Isavasyam idam sarvam yatkinjat jagatyam jagat tena tena punjidaha magrita kasyas vidhanam. You know what is the meaning of it? The entire universe is governed by one force. And all that you see is out of that force. You take as little as possible so that balance is available to others. This is how Isavasya Upanishad conceptualized how human beings must use the resources which have come out of that one single source. Tons of materials have been written about it. That is how Deendayalji conceptualized integral humanism in 4 lectures 60 years back. And it is not that he propounded integral humanism, he actually expounded it. It was there in our Vedas, in our Upanishads, in our Puranas, He culled it out and made it relevant for the context in which he was speaking. As I said, I am not going to go into the theoretical foundations. I will only talk about how Deendayalji's integral humanism or Ekatma Manavvada actually functions on the ground in this country and only in this country. There are 3 foundations of Ekatma Manavvada. One is, it is a civilizational perspective. It gives a helicopter perspective. You see the past, you see now, and you also see how we will move into the future. No great thinker outside the Bharatiya domain has been able to relate the past to the present and what will happen in future, except that they moved from the present to the future, which was not leading the world to the direction in which the world should be going. The second thing is the silo-free. For example, looking at everything as a disconnected, independent area, whether it is economics or
whether it is sociology or philosophy or whether everything is integrated, interconnected. And this specialization, super specialization, is destroyed the very idea of knowledge. Today, if you go to a eye hospital, there are 11 specialists for your eyes. Which specialist will see will have to be decided by a machine. 30 years before it was not like that. 25 years before it was not like that. Today, super specialization has reduced the idea of knowledge which you secure by integrating all the areas of all domains of knowledge. Integral humanism is a helicopter view which connects all the disconnected, interconnected particles of knowledge which is confusing us. All this I am going to relate with reference to actual life, with reference to facts. Third thing is, there is integrality of the individual, the family, the society, to ultimately nature. This is what Deendayal ji said as Vyashti, Samashti and Parameshti. This is what Isavasya Upanishad said. Everything is ultimately on that one universal consciousness. You call it God, you call it nature, you call it anything, or universal power. So, this is the background, these three foundations. Whether these foundations have a factual basis, is there any proof for it? That is what I will examine now. The substance of integral humanism in actual life is a trade-off in the modern language. There is a trade-off between the individual and the family, between the family and the society, between the society and the nation, and ultimately everything is related to the universe. In Mahabharata, the sloka is Tyajatyeham kulasyarte gramarte kulam tejet gramam janavadasyarte atmarte pratim tejet. The individual and the families trade off each other. The family and the society, that is the grama, they trade off. That is, the individual subordinates himself to the family subordinates itself to the grama, and that subordinates itself to the nation. Gramarte kulam, gramam janapadasyarte, that is, the superior position is given to the nation. Ultimately, it is the universe which governs the nature, which governs everything. This is the integral relationship. And this is intermediated by non-formal moral order. There's a beautiful book written by an American. What is the difference between the Indian way of life and the Western way of life? Western way of life is formal order. Bharatiya way of life is informal order. Informal normative order. This is what is dharma. Nobody enforces it. Nobody commands anybody to follow it. Everybody feels it is his duty to do it. It is founded on the idea of duty. That is why when the Universal Declaration of Human Rights was sent to Mahatma Gandhi by H.G. Wells, Mr. Gandhi, you must sign this. Mahatma Gandhi said, I will sign this provided you change the title into Universal Declaration of Human Duties. He said it is duties which have sustained the civilization for thousands and thousands of years. Rights will destroy the sense of duty, so I will not sign it. Today we are celebrating human rights. I am going to tell you how much it is capable of destroying the integrality which Deendayal ji conceptualized and given to us. And now, what is the proof I am giving for this? I am going to give you the proofs like the Newtonian falling apples. Apples were falling. Everybody was looking at the falling apple, but nobody asked why the apples were falling. Newton asked this question. It's not that I'm saying Newton is right, but Newton's inquiry is right. So, we see this happening. I'm going to give you simple facts about Bharat. We have 2.4% of global land area.
And we have 18% of global population. We have 30% of global bovine population. We have 42% of world's cattle population. We have 8% of bioresources. We have 21% forest coverage. This is an ecological wonder. How in a small piece of land, America is 3.5 times the size of India. It has 1/5 of Indian bovine population. You look at China, which is 3.5 times the size of India. It has 1/4 of India's bovine population. So when we say Vasudhaiva Kutumbakam, Vasudha is not world, Vasudha is earth. This earth belongs to everybody. How is it that we are able to live with an unbelievable number of human beings and other beings on a small piece of land? This is a functioning reality. And all this data, if you want, it is in our world in data.com. This is one of the data sources which shocked me. And how, by what scientific or social laws this happened, I'm going to tell you now. You know, we have only the entire world, if you look at it, 71% of the world is sea, 29% is land, out of which 10% is agricultural land, of which we have 1% agricultural land. 1/2 of India is agricultural land. We use the entire agricultural land for cereal cultivation. This is the most important secret we have to understand. Why so many human beings, 18% of world's population and 30 to 42% of the world's cattle population and bovine population can live together. The secret is the fact that we use our entire agricultural land for producing cereals. And I tell you what cereals do. 83% of the calorie values is given only by cereals. Only 17% comes from meat. This is true of the whole world. And cereals give you 37% of the protein value. And meat gives you 37%. That is why we have so much of cereal eating population. Our meat consumption per head per annum is 3.1 kg. This lower meat consumption and our 168 kilos of cereal consumption, the balance between meat and cereal is what makes this whole thing possible. There's a trade-off. It's not that we are a vegetarian society. 2/3 of Bharatiya society is non-vegetarian. But we use non-vegetarian only as a sabji. On a Friday we won't eat. On a Saturday we won't eat. Amavasya we don't eat. What is all this? These are all the scientific principles which the great rishis, saints and seers had given to us to see that the meat consumption is less. America, for instance, 128 kilos is per head per annum. It is 180 in South Africa. Almost 110 in European Union. You may ask, what's wrong? If somebody eats meat, let them eat. But you know, if all Indians decide to eat like Americans, we will need 6 times the agricultural land we have. Our size of India has to be 2.5 times, 3 times more. Because to produce meat takes so much of energy, and you have to produce cereals to produce meat. You produce cereals which give you 83% of the calorie value to produce meat which gives you 17% of the calorie value. And if all Indians, Bharatiyas, tomorrow shift their eating habits, there can be no Bharat. This is the Newtonian falling apple facts, which are falling. We don't know how this whole nation is being sustained. And
This is the Rishi Krishi combination. The Rishis found out this secret that without only by cereals. Another fact I must tell you, 1 kilo of meat gives 10 to 100 times more CO2 gas emission than cereals. 35% of the global CO2 gas emission, which is the biggest problem of the world today, comes out of meat. It's not that we are not meat eaters. We also enjoy meat. But we know how to enjoy it in a limited way so as not to damage environment, so as not to damage our own agriculture, to ensure that all the people get food, the calories. Who found out this meat cereal mix? It is the Rishi and the Krishi combination. So this civilization was built up by rishis, saints and seers who gave us a philosophy, and the philosophy gave us the aim of life, and the aim of life gave us the lifestyle gave us the habits gave us what we need to eat and what we need to have. And if you disturb the philosophy, everything will get disturbed. There is an integrality. And because of this, our country remained extremely peaceful country. I would like you to go, as soon as you get out of this meeting, go and Google a website, Power Kills. In that website, for the last 2,500 years, how human beings have massacred human beings all over the world has been listed, date-wise. How many people died? 1.2 billion people died in 2,500 years. You know, the only place where there was no killing, mass killing, was Bharat till the 13th century. This is an international research by Professor Alzey Ramal, who did this research for 33 years. He was a Hawaii University professor. Our non-violence was extended in every sphere. That's why we were non-violent amongst ourselves. If you are kind to the animals, you will definitely be kind to the human beings. That is the message that our rishis gave. And when you look at the idea of Ekatma Manavada, you cannot limit it only to economics, trade, commerce, government, or government policies. The government is integral to the whole thing. Government is not the promoter. Government should not obstruct it, should not disturb it. So this is how, even today, it's not only that we didn't have huge violence, we didn't kill people. The only violent war that was reported in 2,500 years, that is before the 13th century, for 1800 years, it was only Ashoka's Kalinga war, in which 100,000 people died. So even today, we are the country with the lowest level of crime. If you look at the United Nations data, it shows that in terms of murders, in terms of dacoities, in terms of public crimes, India is among the lowest. In fact, in terms of rape, India does not figure in the list of countries at all, in spite of the fact our media says that India is a country of rapists. That is the extent to which we have made our people illiterates. Because we don't look at the facts, we don't counter. Even the government doesn't do. Because the government officials do not do. We need a totally different mechanism to present the Indian civilization to our people and to the world. These are all available. All the data is available. Now I will come to Deendayal ji, how he perceived this. He said that there was a disruption. One disruption was physical, the other disruption was intellectual. The physical disruption came during the Muslim period, where they disturbed the functioning society. The social order got disturbed. And in the colonial period, they disturbed our mind. You know what kind of debate was going on in the world? William Archer said this is a barbaric society.
He was the one who not only told the world India is barbaric, he told the Indian academics, Indian sociologists, Indian historians. And then came, this was in the 18th century, the 19th century, Karl Marx. Karl Marx said India is a semi-barbaric society. He wrote 2 articles in New York Herald Tribune in the year 1854, before he wrote the Das Capital, where he said that India is a very peculiar country. It has a village republic that there is a least amount of exploitation in the society because the distance between the producer and the consumer is so little that there is no exploitation. But the problem is this country has not changed for the last 2000 years. So to change this, prepare this society for revolution, the British are doing the right thing by destroying the socio-economic base of India. And he quoted Goethe to say, it is a pleasurable destruction. The man never came to India. He never met any Indian. He never met any Indian literature. He spoke about India and he completely changed and confused the intellectual discourse of India. Then came Max Weber. Max Weber was the father of modern Western civilization. Because I don't want to go deep into it except state this because this will be undenied. Everybody will accept it. He said that every nation will develop. 2 nations cannot develop. The nation which follows Hinduism and Buddhism because they believe in karma and rebirth. India and China will never develop under modern capitalist conditions. You know, these 2 great people were, even today, it is they who control the academic mind of India. Max Weber and Karl Marx. That you are unfit for development, that you have to ignore your past. You have to become unlike what you are. A Bharatiya has to cease to be a Bharatiya to develop. In 1951, the United Nations set out a circular, which was accepted by the whole world, that if you want to develop, you have to give up your philosophy, your value systems, your way of life. Otherwise, you can't develop. That is how you are taught. Our economics, everything followed that course. And this was happening. And in 1978, the economic advisor to the government of India said, when he was asked the question, that socialist countries are developing, you are also a socialist country, you are not developing. He said, what can you do? We may be a socialist country, we are also a Hindu country, we can have only the Hindu rate of growth. Professor Raj Krishna made this shameless statement. This is being repeated even today in 1978. In 1983, something stunning happens. Paul Bayrock was mandated by the General Agreement on Trade and Tariff to find out the economic growth of the world between 1750 and 1900. And he came out with a stunning finding that in the year 1750, China was number 1 country with 30% of world's GDP. India was the number 2 country with 25% of world GDP. And America and England put together just 2%. And he said everything changed in 1900. America and England rose to 42%. India and China crashed to 8%. India 1.8% and China 6.2%. And that's how rich nations became poor nations. Many French sociologists began saying, let us admit that in the 17th century, 16th century, India and China had much better standard of living than Europe. This could not be tolerated. Then the OECD countries constituted a research by the Development Studies Institute, headed by Angus Madison. And he came out with a report and he started saying Paul Bayrock's methodology is wrong. And I am going to do it. And after 18 years of work, he put out World Economic History, a millennial perspective, where he said from the first year of the Common Era to 17th century, India was the leading economic power of the world. When I mentioned this, IIT people did not know. When I spoke there, they asked me to take classes. That is the extent to which the Indian academia, Indian public discourse, Deendayalji knew this. He said it is this disruption, this intellectual disruption, that has made us unaware of who we are.
Then I will come to, you have this Integral Humanism, page 11, where Deendayal ji says, where should we start? 60 years before Deendayal ji asked this question, where do we start? And now we have to ask the question, where did we start and where we are today and where we will be? And that is what I am going to tell you now. Where do we stand? You know, when China began developing, China was 0, America was 100. Deng Xiaoping targeted that I have to grow only by sapping the American blood. He told his people, let us bide our time. 30 years, China overtook America. Almost overtook America means in many areas. They will overtake America. Maybe in another 30, 35 years, they will become the number one nation. Because they chose to be long-term players. India is a long-term player. We should not compare ourselves on a day-to-day basis, decadal basis, yearly basis with the Western countries, which are short-termist. You know, after 2008 economic crisis, there were many researches why the American economy or the Western economy became weak, because they were short-termist. And so short-termist, overnight interest rates began deciding the mood of the nations. Quarterly results became more important. So they became short-termist, but we are long-term, because our life has a beginning. We have a previous life also. We have a later life also. So our life has a longer idea. So we are a long-term society. They are short-termist, and we are always seen to be behind, but actually we will be ahead. I'll tell you how. Colonialism lasted for 200 years. Mercantile capitalism lasted for 100 years. Communism lasted for 50 years. Globalization lasted for 25 years. My colleagues in the Swadeshi Jagran Manch are there when we were talking in 1990s that globalization will collapse. We were called fools. We were called Neanderthal economists. Justice Jagdish Bhagavati, who was the economist, he told me, Gurumurthy were an economist, you can call me a Bharatanatyam dancer. That is the extent to which we were humiliated. Today, globalization is dead, because these are short-term approach to the world. A civilizational approach is a long-term approach. And this is what great thinkers did. And I am not saying Deng Xiaoping is a great thinker, but he understood the difference between the Chinese society and the Western society. And so he gave a formulation: let us not compare ourselves on a day-to-day basis or quarterly basis or yearly basis. Let us work. So our people are like that. Our lifestyle is like that. That is why we are saving space. We spend less. Our women are the very, very important sources of economic well-being. This I have always said. In 2001, when I spoke to a group of Americans, I said, Indian economy is feminine in character. They will not waste anything. They will turn waste into wealth. Whereas America turns wealth into waste. See, two different paradigms. This is the substance. But what happened after Deendayal ji is important. Deendayal ji lamented in the same para, page 11, that we were fighting only for our survival for 1,000 years. So we have not been able to contribute to the world. This is because we, after Krishna and Kautilya, one Banabhatta came. I don't know how many people have read the Dharmashastra volumes of Bhandarkar Institute. Krishna said, you should treat the enemy like how he will treat you. When Arjuna was hesitant to hit Karna, he said, hit him. He said he cannot defend himself. He has no right to the benefit of dharma, because he gave up dharma when Draupadi was being disrobed. Kill him. This is a new formulation. It was not there before. If you look at Rama,
Rama told Ravana, you come back tomorrow. Krishna said, you kill Arjuna, you kill him. This was captured by Kautilya. The best description about Kautilya interaction with Alexander, you will be surprised to know, I got in Pakistan government's website. Pakistan government's website has a chapter called the History and Culture of Pakistan, which says our forefather was Takshaka. Who is saying it? Pakistan government website. And Takshashila University was a great university. We promoted all the world leaders used to come and read here. This is where Kautilya taught. This is where Chandragupta Maurya, Ashoka were all students. Where do you find this? In Pakistan government website. I asked Mr. Ajit Doval, how is it that it is appearing? He said they have no other history to write. There that website says that Alexander came and there was an interaction between Alexander and Kautilya. Kautilya, simply because you have a huge army, you cannot hit. You have to give notice to the other side. They may negotiate with you. They may not have a war with you. They may even surrender to you. He said, who are you? We have not known such a law. Then he ordered his arrest. Kautilya ran. Pakistan government website says Kautilya ran so fast he could not be captured. He went to the forest. He conceptualized that we have a very different enemy to face. Then in the Arthashastra, he advocated what is known as Lobha Vijaya, that you have to conquer. Previously, if an Indian king won, he has to hand over the kingdom back to the defeated king. Kautilya said, no, you have to seize that kingdom. You have to build an empire. You have to have a rebellion army. You have to have finances. Then only you can have an empire. Unless you have an empire, you cannot face the new enemy. 10 centuries, India had a very powerful Hindu empire till almost the 8th century. When Banabhatta came in the 4th century in Bihar, he said that our people began clashing because when everybody had army, then we also began clashing. This Kautilya had made us violent. He is an adharmi. You know what was the consequence? Arthashastra books were burnt all over India. Only one copy escaped. That is in Tanjore. And that was gifted, Tanjore Maharaja Library. And that was gifted to the Mysore Maharaja Library in 1909, translated into English in 1913. That was the extent to which there was ambivalence in India about violence. Bharatiyas, Hindus, our saints and seers had always this ambivalence. How much violence we should allow? This will unnecessarily result in killing. And this course correction took place only because of two great individuals, one in the north, Guru Gobind Singh, and in the south, it is Chhatrapati Shivaji. They said you have to treat the enemy in the way in which they treat you. If Prithviraj Chauhan had done this in Delhi, he would never have become a lost nation. We excused him like we will excuse our own king. This is what Deendayal ji said as the intellectual confusion. And we have to get out of it. With the result, a 1,000-year strategic deficit was there in India, which was corrected in stages. You know, Bharatiya Janasangh was the only party which said we should produce atom bomb. Supposed to be blasphemous in India. Unacceptable. When we actually exploded the atom bomb in 1998, Bill Clinton said that a land of Gandhi and Buddha has done this. We were always a land of Gandhi and Buddha. Did you respect us? Did you give us value? Only the sound of atom bomb made India a country which the West accepts, because this is a world of power. We needed the grammar of power to handle the West.
because West is very violent. As I said, R.J. Ramal said 1.2 billion people were killed. See how India has moved. 1971, we first proved. 74, we exploded the first atom bomb. 1998, the Pokhran atom bomb. 2016, the surgical strike. 2019, the air strike. Very different country. It is not, this is the country India Deendayal ji wanted. We have to go back to our, Guruji used to say Parakramavada. And we are a different country. Our ambivalence to violence and war has ceased. If there is bloodshed by you, we will shed your blood. This is what the Prime Minister said. This did not happen in 2008 when the whole country was saw for 48 hours. Bombay was being ravaged. We were carrying candlesticks. The same violence today, it is not candlesticks, it is Brahmos. Finally, we have now moved far ahead. We are now a respected nation in the world. Nobody can ignore us. We are not a pushover. And we are emerging as a future hope for the world. People are looking at GDP, people are looking at this. I will tell you, finally, what the American society is about today. Many people think Trump is tariff. No. Trump's problem is that in 1960, America had 87.5% non-Hispanic white population. It became 70%, 72% in 2000. Today it is 58%. In 2030, it will become 54%. By 2040, America will cease to be a white American nation. This is the problem. And Pew Research Institute wrote, what is the problem with America? In America, it is only the state, it is the constitution, it is the party, it is the president, it is the rule of law, it is the court, which unifies America. Pew Research says that, like in all countries, there is division in America, polarization in America between two political parties. 60% of the Republicans won't marry into Democrat families and vice versa today. It used to be 5% 20 years back. So families are torn, localities are torn, communities are torn. In 2022, it's all available in the internet. You can go and see. 5 American chief of staff and 6 defense secretaries wrote a letter to the Pentagon saying that if a Trump or Trump-like figure contests the 2024 election and loses, there will be civil war in America. It will not be in the border. It will be within the family. It will be in the neighborhood. It will be on the basis of religion, color, race. You know why? 2015, the Time magazine came out. Then only you will understand what is integral humanism, Ekanatma Manavada. In 2015, Times magazine came out with a beautiful story. Italy has 30,000 canonized saints. Every locality, every street, every village will have a canonized saint. Their place, their houses, their churches, they are all sacred places. You know, in America, till now, there are only 3 canonized saints. There is no sacred river, there is no sacred mountain, there is no sacred place. It's a top-down statecraft. You look at ours is a bottom-upward statecraft. That is why 67 crore people assembled one place in 45 days. Nobody invited them. I was there for 3 days. I was just looking at the crowd. They were carrying children, they were carrying elders, they were carrying bags, they were sleeping wherever they got. Fundamental unity of India. The integrality cutting across everything.
a nation as sacred. That is fundamental to the idea of Ekatma Manavada. And so we have to look at it in this sense and not limited to mere economics, trade, commerce. And I am happy that I got this opportunity to share this idea. By 2047, India's GDP and all that is quite different, but India will emerge as the, Bharat will emerge as the model nation, society, state of the world. Thank you very much. Thanks, sir, for such a thought-provoking address. समय की मर्यादा है, अगर समय और होता तो ऐसा लगता आप बोलते रहे और हम चुपचाप उसको सुनते रहे और ग्रहण करते रहे। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से, वो आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कमेमोरेटिव सेमिनार में हमारे मंच पर उपस्थित आज के वैलेडिक्टरी फंक्शन के मुख्य वक्ता और जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला और युवा काल में काम करने का मौका मिला, ऐसे श्री एस गुरुमूर्ति जी, हमारे बहुत ही आदर के योग्य, जिनसे मैंने विद्यार्थी काल से लेकर राजनीतिक समझ और आर्थिक समझ और सामाजिक समझ में हासिल की, ऐसे हमारे आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी, हमारे साथी अनिर्वाण गांगुली जी, हमारे प्रभात प्रकाशन के मित्र प्रभात कुमार जी, सुमित भसीन जी, हमारे सभी यहाँ उपस्थित नॉलेज पार्टनर्स, सांसदगण, विधायकगण और हमारे जिसे हम कहते हैं कि अध्यात्म से लेकर के अध्ययन करने वाले ऐसे प्रेमी सज्जन वृंद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। गुरुमूर्ति जी के वैलेडिक्टरी फंक्शन के बाद कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिपूर्णता में सारी बात हम सबके सामने रखी है। लेकिन मैं सबसे पहले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन PPRC, एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान और प्रभात प्रकाशन, इनको बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास किया है कमेमोरेटिव सेमिनार करके, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। और उसमें इन्होंने बहुत से सब्जेक्ट्स को टच किया, शिक्षा, संस्कृति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एंड यूथ, हमारे बॉर्डर को स्ट्रेंथनिंग और उसके साथ साथ सिविलाइजेशन में हमारे रोल्स और ड्यूटीज, ऐसे सभी सब्जेक्ट्स को इन्होंने टच किया है और उसके बारे में चर्चा की। मुझे यह भी अच्छा लगा जब विनय जी वे फॉरवर्ड की बात रख रहे थे तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन और इसके साथ साथ हमारे जिसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उस सब का समग्रता से विचार करने की आवश्यकता है। हम सब लोग जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी, मैं कई बार कहता हूं कि 3 in 1 थे। कोई व्यक्ति सिर्फ लीडर होता है, कोई व्यक्ति विचारक होता है, कोई व्यक्ति संगठक होता है, लेकिन दीनदयाल जी 3 in 1 थे। He was a leader in his own right, he was a thinker and he was an organizer। इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में, और इसीलिए हम सुनते हैं कि कभी गुरुजी भी कहते थे कि हमें ऐसे 4 दीनदयाल मिल जाएं
तो मैं देश में परिवर्तन ले आऊं। सभी लोगों को, और हम जानते हैं कि भारतीय जनसंघ को भी उन्होंने कितनी छोटी सी अवधि में एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित किया। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वो असमय चले गए, लेकिन उन्होंने पार्टी की विचारधारा की बीज बोने का काम, और वही हमारी विचारधारा स्थायित्व के रूप में सामने आई और जिसको हम सब लोग जानते हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब दीनदयाल जी इस बात को प्रतिपादित करने में लगे हुए, उस समय हमारे ऊपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बड़ा इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा पाश्चात्य देश का सोच में, रहन सहन में, कार्यशैली में, सब चीजों में पाश्चात्य जगत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। यानी अगर कोई विचार की बात की जाए तो वो सोशलिज्म हो, फेबियन सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, ये सब विदेशी धरती से उत्पादित विचारधारा हमारे ऊपर डालने की। और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत को भारतीय सोच को प्रमुखता देकर के ही अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के नाम पर, एकात्म मानववाद के नाम पर इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज से 60 साल पहले 22 अप्रैल से लेकर के मुझे शायद 25 अप्रैल तक की बात थी, जब उन्होंने 4 दिन का व्याख्यान आइडियोलॉजी के ऊपर दिया था, और हम आज 60 साल बाद जब इस तरह के 2 दिन की विचारधारा के लिए ये कार्यशाला, ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सही है। और मैं फिर आयोजकों से और विनय जी से निवेदन करूंगा कि हम यहीं नहीं रुक जाएं कि सेमिनार कर दिया, बल्कि इसको प्रतिपादित करके इस्टेब्लिश तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको रूप देने की आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत कम समय में, बहुत कम समय, और उनकी सेवाएं पार्टी को भी बहुत कम समय, लेकिन उसमें ही उन्होंने विचारधारा की दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं बीजारोपण करने का काम किया, और उन्होंने उसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के साथ जोड़ा। गुरुमूर्ति जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी, लेकिन एक बात मोटा मोटी अगर हम समझें तो भारतीय विचारधारा, भारतीय सोच, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार करने की प्रणाली, इस पर दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत जोर था। हमारी परंपराएं कोई 2 दिन में नहीं बनी, हमारी परंपराएं हजारों साल के एक्सपीरियंसेस से बनी, और उनका राजनीतिक से लेकर के सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है। इसलिए हमको आर्थिक दृष्टि से भी अपनी सोच को प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। हमको ये इतना बड़ा देश, अगर 140 करोड़ का देश है, तो इस देश को चलाने के लिए वी कैन नॉट बी ए सेंट्रलाइज सिस्टम, वी हैव टू बी ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और इसलिए उन्होंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बातचीत। और इसी तरीके से अगर हम कहें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी उन्होंने बल दिया। मूल बातें जो उनकी सोच में थी, जो आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी द स्टैंडर्ड्स व्हिच वी हैव टू अडहेयर टू, वी हैव टू हैव आवर ओन इंडियन स्टैंडर्ड्स, और हमें भारतीय स्टैंडर्ड्स के ही तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता हो। ये जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था तो उस समय ऐसा लगता होगा कि शायद ये असंभव है, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे पैरामीटर्स को इंडियन स्टैंडर्ड्स पर बना करके तैयार कर रहे हैं। ये परिवर्तन आकर के उसी तरीके से उन्होंने स्वदेशी के बारे में कहा कि अगर हमको अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमको स्वदेशी की तरफ जोर देने की आवश्यकता है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं कि वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं। स्वदेशी के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम 70,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। आज से 10 साल पहले हम
92% मोबाइल्स एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। आज हम 97% मोबाइल्स भारत बना रहा है और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सेकंड लार्जेस्ट इन स्टील हो गए हैं। हम टॉय इंडस्ट्री में, कभी हम गणेश जी भी चाइना से खरीदने लग गए थे, आज हम टॉय इंडस्ट्री में भी तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं और ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं। तो एक तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस तो हमने देखी ही, ब्रह्मोस की हमने सक्सेस तो देखी ही, लेकिन हमारा डिफेंस प्रोटेक्शन 1.30 लाख करोड़ का हो गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए हम हर तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास। एक बात दीनदयाल जी ने, मैं महेश जी हमारे, मैं जब विद्यार्थी था तो महेश जी हमारे संगठन का काम देखते थे और दीनदयाल जी पर उस समय से हम आपको अथॉरिटी मानते रहे हैं। तो हमारे यहाँ वामपंथियों का बड़ा प्रभाव था, तो मैं इनसे पूछता था हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है, हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है, और महेश जी हमको इकोनॉमिक मॉडल समझाया करते थे और उसमें भी उनका कहना था कि दीनदयाल जी के इकोनॉमिक मॉडल एक पार्ट है, अकेला नहीं है, इट इज जस्ट वन पार्ट। लेकिन आज अगर हम बात करें, और उस समय जब हमारे को छात्र बोलते थे कि भाई तुम्हारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है, हम बोलते थे बताएंगे बताएंगे बताएंगे। लेकिन हमें समझ में आया कि अगर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अंत्योदय से जोड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, तो ये इंटीग्रल मॉडल का इकोनॉमिक मॉडल है, इसको भी हमको समझना चाहिए। जो लोग आर्थिक मॉडल के बड़े चैंपियंस बनते थे वो दुनिया में बिफर गए। दुनिया में, प्रदेशों में तो छोड़ दो, भारत तो डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने तो उनको डेमोक्रेसी में सरकार दी थी, वो तो यहां पर बिफर ही गए। लेकिन सही मायने में अगर हम कहें सोशलिज्म की बातचीत करें, अगर हम बात करें समाज की चिंता की बात, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से स्पष्ट था, अंतिम व्यक्ति की चिंता करो। वो कहते थे इकोनॉमी इज नॉट नोन बाय द टॉप पर्सन ऑफ द एट द टॉप ऑफ द लैडर, बट द इकोनॉमी इज नोन बाय द लास्ट मैन इन द लैडर, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है। और उन्हीं की प्रेरणा से हम अंत्योदय की तरफ आगे बढ़े और हम लोगों ने अंत्योदय में कोशिश की कि हम लोगों को राहत दे सकें और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके तहत आज ये सरकार काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हुए हैं उस काम को करने के। लेकिन जब हम गरीब की बात करते हैं तो सही मायने में गरीब का भला किसने किया? लोगों ने नारे तो लगाए, लेकिन 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। 25 करोड़ पीपल हैव कम अबव दी आर इन दी कैटेगरी ऑफ अबव पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल थे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर एलपीजी सिलेंडर, अब ये कहना तो आसान है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन की डेवलपमेंट की बात करते थे, कैसा जीवन था हमारे महिलाओं का, हमारी बहनों का। उनको 10 करोड़ से ज्यादा को एलपीजी के सिलेंडर देना, ये भारत के परिवर्तन में, और इसकी भी प्रेरणा हम एकात्म मानववाद से जोड़ेंगे और इकोनॉमिक मॉडल से जोड़ेंगे और उसके साथ ही हम उसको जोड़ करके देखने का प्रयास करें। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने भी देखे होंगे, गांव गांव जाओ, कच्चे मकान, खपड़ैल मकान, आज आप धीरे धीरे देख रहे हैं 4 करोड़ पक्के मकान बने और इस 2029 से पहले 3 करोड़ और पक्के मकान मिलेंगे और उसमें भी 75% उसकी मलकियत महिलाओं के पास है, 75%। तो आप समझिए कि वेमेन के भी डेवलपमेंट है और वेमेन के डेवलपमेंट के साथ साथ वह गरीबों का भी डेवलपमेंट है। स्वच्छता अभियान, टॉयलेट्स की बात कीजिए, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। ये छोटा नंबर है। मतलब भारत की तस्वीर आप देखिए, लोग जो इकोनॉमिक मॉडल की बात करते थे, भारत की तस्वीर देखिए कि 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बाहर जाया करती थी, उनको अगर इज्जत देने का काम किया तो वो दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरित होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
इसलिए ऐसे में अभी किसान की बात कीजिए, चर्चाएं तो बहुत की, सब लोगों ने किसान, भारत किसानों का देश है, भारत किसानों का देश है, हर नेता किसान नेता बनने लगा। किसानों के लिए किसने काम किया? दीनदयाल जी से प्रेरणा लेकर के हमारे अटल जी ने किया, और बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की तस्वीर और तकदीर बदली। किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये छोटी संख्या नहीं है। डिस्पोजल 1,35 लाख करोड़ है फसल बीमा योजना में डिस्पोजल। 36 लाख करोड़ रुपए है 19 इंस्टॉलमेंट्स में, 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का 19 इंस्टॉलमेंट्स दे चुके हैं। कभी सोचा था किसी ने कि इस तरीके से किसानों की सम्मान निधि दी जाएगी हर तीसरे महीने? और 19 इंस्टॉलमेंट दिया जा चुका है। 3.6 लाख करोड़ हैज बीन डिस्पर्स्ड। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। अच्छा, इस 9 करोड़ में भी 2.5 करोड़ बहनें हैं किसान, जिनको किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है। इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ किसान, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम। पंचप्रण में भी जिन बात को हम कहते हैं वो हमारा इमोशनल क्वोशंट भी है, उसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात भी है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखेंगे, हम कॉलोनियल रूल से बाहर आएंगे, यानी हमारी मानसिकता जो है वो इंडिपेंडेंट स्वदेशी सोच के साथ आगे बढ़ेगी। तो ये सारी बातों को जोड़ने का प्रेरणा अगर हम देखेंगे तो वो हमको, हमारी विचारधारा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। महेश जी एकात्म मानववाद के ज्ञाता हैं, उनसे हम लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं। गुरुमूर्ति जी ने आज उसके बहुत से आयाम को आपके सामने रखा है, उसके सॉफ्ट पावर को भी रखा है। भारत किस तरीके से महान है और भारत किस तरीके से 1.4 बिलियन पीपल को संभाल करके चल रहा है, इसमें बहुत गहरी सोच के साथ ये जो हमारी परंपराओं से, ऋषि मुनियों के अध्ययन से निकली हुई जीवन की शैली रही है, उसमें से निकल करके आया है, और उसी को दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखने का प्रयास किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो क्रम आपका चला है, जिसमें पीपीआरसी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, एकात्म मानव दर्शन और हमारे प्रभात प्रकाशन, सभी मिलकर इसको एक कोई स्थायी रूप दे, एक परमानेंसी का रूप दे, ताकि, क्योंकि विचारधारा स्थूल नहीं होती, विचारधारा स्टैग्नेंट नहीं होती, विचारधारा हमेशा क्रियाशील रहती है, डायनेमिक रहती है, समय के साथ साथ उसके नए आयाम जुड़ते रहते हैं, और उन नए आयामों को परिष्कृत करके अपनी विचारधारा में डाल करके सोचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। और इसके लिए कोई ना कोई हमारी विचारधारा की मैकेनिज्म डेवलप होनी चाहिए। जिस बीज को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोया था, वो पौधे के रूप में आज देश में शासन के माध्यम से प्रयास पूर्वक हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस पौधे को विशालकाय पेड़ भी बनना है, क्योंकि हमें सिर्फ भारत को ही दृष्टि नहीं देनी है, हमको दुनिया को भी दृष्टि देनी है, और इसके लिए इस पर स्थायित्व लाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे, और मैं इस प्रयास के लिए फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और गुरुमूर्ति जी के जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मार्गदर्शन किया है उसको हम सब लोग अपने साथ समावेश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं भाई श्री विष्णु मित्तल जी से, जो पिछले कुछ सप्ताह से हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। इससे पहले वो आए, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि सभी डेलीगेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन डेस्क में रजिस्टर किया हुआ है वो अपनी डेस्क पे जाके अपने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ले लें। मैं आमंत्रित करता हूं श्री विष्णु मित्तल जी को। बोलिए भारत माता की।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद व्याख्यानों के राष्ट्रीय स्मृति सम्मेलन के 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के समारोह सत्र में मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds. माँ मैं निकल रही हूँ। खाना भी तैयार है। आखिर कौन सी ट्रेन छूट जाएगी? माँ मैं लेट हो जाऊंगी। बचपन में क्या सिखाया था? खाने में समझौता नहीं, जिसे मंजूर ऊंचा उठे वो बड़ा जाए बहुत ही दूर। तुझे बहुत दूर जाना है, उड़ जा उड़ जा, तुझे बहुत दूर जाना है। खाने में समझौता नहीं, अच्छा खाना शुरुआत से ही। इंडिपेंडेंस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।